हेलो दोस्तों, केम छो? तो स्वागत है अपने नवा वीडियो में। तो आज आप बात करीशू कि ग्राउंड में जता पहले शू ध्यान राखવું बराबर, एम शू डॉक्यूमेंट जो है बधु। तो वीडियो है लास्ट सुधी बने रहो तो तमने यूजफुल थशे अने बीजा मित्रों पण वीडियो शेर कर दीजिए। अने आपणे टेलिग्राम पर बधु अवारनवार अने मॉक टेस्टना विषय बधी माहिती अने भर्ती रिलेटेड कोई भी माहिती होय तो मूकतो रहूँ छूँ, खास जोई लेजो। अने एमां करंट अफेर पण मूकवानुं छे हवे, तो एमां जॉइन थई जजो बराबर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मूकेली है, तो त्यांथी जॉइन कर लेजो टेलिग्राम में बराबर। तो आपणे विडियो शुरू करिए कि शू ध्यान राखવું। तो शुरुआत में जो तमे ग्राउंड में जाओ छो तो कॉल लेटर है एक खास बारकोड वाळू आवे छे, ऊपर बारकोड जे होय ए देखावो होवो जोईए, ए खास ध्यान राखो। एवं कॉल लेटर डाउनलॉड तो करी दीधुं हशे ऑलरेडी, पण एवं प्रिंट थवुं जोईए। प्रिंट में थोड़ुं कदाच कोई आवे छे ब्लेक एंड व्हाइट कई बी प्रॉब्लम इश्यू आवे छे, बारकोड अर्धो छापेलो छे अर्धो नथी छापेलो, तो ए आखो छापेलो होवो जोईए बारकोड, केम के त्यां ज्यारे बायोमेट्रिक हशे त्यारे ए बारकोड छे स्केन करवानो आवतो होय छे एना कारणे बराबर। अने बीजी वस्तु के जोड़े एक आईडी प्रूफ राखवानुं, जेमां आधार कार्ड होय तो पण चालशे, चूंटणी कार्ड हशे तो पण चालशे, के ड्राइविंग लाइसेंस हशे तो पण चालशे बराबर। तो आ बे वस्तु राखवानी, आधार कार्ड का तो चूंटणी कार्ड का तो ड्राइविंग लाइसेंस बराबर। आ त्रणमांथी कोई बी एक हशे अने कॉल लेटर बराबर। आ बे वस्तु जोड़ी राखवानी। मारा ख्यालथी आधार कार्ड अने कॉल लेटर बे वस्तु लई जशो एटले वांधो नहीं आवे बराबर। अने त्यां ज्यारे एंट्री लेशो तमे, अंदर एंट्री जशो त्यारे त्यां बेग मूकवा देशे, मुकाई अने पछी लाइन में बेसाडवानो छे। लाइन में बेस्या पछी तमारुं कॉल लेटर बताववानुं रहेशे अने त्यां तमारुं नाम ने कॉल लेटर अने आईडी प्रूफ चेक करशे अने पछी चेस्ट नंबर आपशे अने पछी चिप्स बांधशे पगमां अने पछी आपणे ग्राउंड में दौड़वानुं होय छे बराबर। तो आ बधी ग्राउंडनी माहिती छे ए खास जरूरी होवी जोईए, केम घणा छोकराओ बधी आखी फाइल लईने जता रहे छे, डॉक्यूमेंट अने आम तेम पण आखुं डॉक्यूमेंट लईने जवानी जरूर नथी बधा, केम के डॉक्यूमेंट लईने जशुं के खोवाई जाय तो लोचा पड़े। खाली त्यां छे ए आधार कार्ड अने आपणुं कॉल लेटर छे ए बस बे ज वस्तु लईने जवानी छे अने छेक छेल्ले सुधी आपणे साचवी रखवानी छे। एटला माटे कई नाइटी का तो एवी रीतना खीचो होय ए वस्तु पहेरीने जवानी बराबर, एटला माटे वांधो ना आवे, केम के ए लास्ट सुधी साचवी राखवानुं होय छे। छेल्ले ज्यारे तमे रनिंग पास करो छो पछी रनिंग पास कर्या पछी रनिंग में शुं ध्यान राखવું કે જ્યારે રનિંગ દોડો છો તમે ત્યારે તમને એના પહેલાં चिप्स बांध्या पछी तमने हाथ में रबड़ आपवामां आवशे। ए रबड़ बांधवाना छे तमारे हाथ में, तो रबड़ पहेरी देवाना। 12 राउंड में रन होय तो 10 आंगळीओ में 10 अने 2 कांडामां पहेरी देवाना, टोटल 12 थई जाय। 13 होय तो एक हाथ में राखवानुं बराबर। अने रनिंग करीने आवो छो, एक राउंड मारो छो एटले रबड़ फेंकी देवानुं, बीजो राउंड मारो छो एटले बीजो रबड़ फेंकी देवानुं, एवी रीते 12 राउंड मारो छो तो 12 रबड़ फेंकी देवाना। एटले तमारे जे याद राखवाना होय छे ग्राउंड ए भूली ना जाओ, एना माटे रबड़ बेन्ड होय छे बराबर। ए पूरुं थई जाय पछी तमारे बेसाड़ी देशे अने पछी त्यां नाम बोलशे, जेटला पण पास थया छे उमेदवार ए बधाना नाम बोलशे अने ए नाम आधारे नाम तो बराबर पण चेस्ट नंबर जे आपणो होय आपेलो होय ए चेस्ट नंबर बोलशे बराबर। ए चेस्ट नंबर प्रमाणे आपणे त्यां रहेवानुं बराबर। अने पछी साइन करवा बोलावशे के तमारुं नाम हशे, साइन करवानी हशे अने बाजुमां तमे केटला मिनिटमां पूरुं कर्युं ए पण लखेલું છે साइडमां बराबर। तो साइन करी अने पछी चेस्ट मापवा अने हाइट मापवा बोलावशे बराबर। तो चेस्ट अने हाइट मपाई जाय एना पछी तमारे बहार निकळवानुं रहेशे, त्यारे पीईटी अने पीएसटी सिक्को वागी जशे अने पछी तमारुं फाइनल पूरुं थई जशे बधुं ग्राउंड। पण ज्यारे तमे हाइट अने वेट मापवा हाइट अने चेस्ट मापवा जाओ छो त्यारे ध्यान एटलुं राखवानुं के हाइट में तो चलवी लेता ज नथी, जेटली हाइट होय एटलुं चाले बराबर। पण एटलुं राखवानुं के चेस्ट ज्यारे मापे छे त्यारे जोतुं रहेवानुं के केटली चेस्ट नॉर्मल थाय छे बराबर। आपणे खबर होवी जोईए के आपणी चेस्ट आटली थाय छे बराबर, केम के त्यां थोड़ुं आम चेस्ट मापता होय त्यारे थोड़ुं વધઘટ કરીને बोलता होय छे, तो आपणे तरत बोली देवानुं के मारी चेस्ट आटली थाय छे तो आटली केम बोलुं छे। मारा एक फ्रेंडने एवुं थयुं हतुं एटला माटे हुं तमने कहूं छुं के चेस्ट मापता होय त्यारे खास ध्यान राखवानुं। चेस्ट मापे पछी फूलाईने मापे त्यारे पण ध्यान राखवानुं। आपणे 5 इंच फूलावी जोईए बराबर, पण ए ज्यारे फूले त्यारे केटली मापता होय छे अने केटલું होय छे ए ध्यान राखवानुं। मेजरमेंट केटલું લે છે बराबर, केम के 1-2 इंच ए लोको ओછી ज बोलता होय छे एटला माटे। એટલે આપણે ખાસ ध्यान राखવાનું, જેને ચેસ્ટ નથી થતી એને તો ખાસ ध्यान રાખવાનું બરાબર, કેમ કે શરૂઆતમાં પહેલી જે 8-9 તારીખ હતી ત્યારે ઘણા મિત્રો એમાં ફેલ થયા હતા चेस्टना कारणे। पण एमने ज्यारे एक मित्र सर्विसमां हतो अने एने कीधुं के मारी चेस्ट थई जाय छे पण केम आवी रीते खोटी लखी छे, तो एने रिफॉर्म आपे फरीथी भराव्युं अने पछी बीजा मोटा अधिकारी हता एसपी साहेब एमने बोलाव्या अने एमने
આગળ ફરીથી વિડીયો ઉતારીને ચેક કરાવ્યું ત્યારે એને ચેસ્ટ થઈ અને બીજા જે 5 કાઢ્યા હતા મિત્રો એ પણ પછી એમને ફરીથી ફોર્મ ભરાઈને કરાવ્યું તો એ 5 પછી ચેસ્ટમાં પાસ થયા. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ચેસ્ટમાં ફેલ કરે જ છે એટલા માટે, બરાબર. બીજું માહિતી આ જ હતી, બીજી કંઈ નહીં. અને બીજા મિત્રોને ખાસ વિનંતી છે કે જ્યારે ગ્રાઉન્ડમાં તમે દોડવા જાઓ છો ત્યારે તમારે કદાચ એક રાઉન્ડ, 2 રાઉન્ડ કે અમુક 5-6 રાઉન્ડ પછી ઊભા રહી જાય છે અને પછી ચાલવા માંડે છે. તો બીજાને પ્રોબ્લેમ ના થાય એટલા માટે ખાસ તમારે ત્યાંથી હટી જવું જોઈએ. જો તમારે રનિંગ નથી કરવું અને નથી થતું તો ત્યાંથી હટી જવું જોઈએ. મિત્રો તૈયારી કરે છે અને જેટલા દોડતા હોય છે એમને ખોટા વચ્ચે નડો નહીં એટલા માટે ખાસ એટલું પોતે સમજી લેવાનું કે આપણે નથી થતું તો બીજાને આપણે અગવડ થાય એટલા માટે આપણે અહીંથી બહાર નીકળી જવું જોઈએ, બરાબર. તો ઘણા મિત્રો આ વખતે ગઈ ભરતીમાં તો બધા સાથ આપતા હતા કે ચલો ભાઈ, હાથ પકડીને દોડતા હતા કે દોડ ભાઈ દોડ. પણ આ વખતે ઘણા ખરા મિત્રો સાઈડમાં નથી જતા હોતા. જો તમારે નથી થતું તો પછી તમે સાઈડમાં જતા રહો, બીજાને પણ મોકો આપો. બીજો ખોટું એનું ટાઈમિંગ વધી જાય, એ ફેલ થાય, એના કરતાં તમે સાઈડમાં રહી જાઓ અને એને દોડવા દો, બરાબર. તો ખાસ વિનંતી છે કે તમે તમારું જો રનિંગ નથી થતું તો સાઈડમાં જતા રહો, બરાબર. બીજું કોઈ નહીં. અત્યારે થોડી પબ્લિક અત્યારે બહુ પેલી થઈ ગઈ છે કે હું પાસ નથી થતું તો બીજાને પણ ના થતું, પણ એવું થોડું પણ ના રાખો, બરાબર. બીજાને મોકો આપો. બીજાની પરિસ્થિતિ સારી ના હોય, બિચારો મહેનત કરતો હોય, બરાબર, તો એને દોડવા દો. મહેનત કરી છે એને તો એને દોડવા દો, બરાબર. બીજું કંઈ છે નહીં. તો એ રીતની બધી માહિતી છે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાની અને વિડીયો બધાની સુધી શેર કરી દેજો, બરાબર. અને આજ માટે આટલું રાખીએ અને ટેલિગ્રામમાં તમે જોઈન થઈ જજો, બધી અપડેટ એમાં આપતો રહીશ, બરાબર. અને આપણો બ્લોગ આવશે થોડાક ટૂંક સમયમાં. મારે 18 તારીખે રનિંગ છે તો 18 તારીખે પૂરું થઈ જાય પછી આપણે મારું રનિંગ શું થયું છે શું એનો વ્લોગ બનાવીશું. તો વ્લોગમાં પણ બને રહેજો અને આપણી યુટ્યુબ ચેનલ છે એને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બીજાને શેર કરી દેજો. આજ માટે આટલું રાખીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.